योर इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सारा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इन दोनों का आपस में डिफरेंशिएशन क्या है. Then we also studied a few topics related to your cost reduction, cost management, and cost control. Today we are starting with a new topic which pertains to your analysis of financial statements. Although the main topic is analysis of financial statements, but it is very important to understand what are financial statements before proceeding with the analysis. So once we are starting with the financial statements, we are going to cover up these topics under it: the meaning, the definition, nature, objective, different types, preparation, characteristics, use and importance, and limitations. Now coming to your financial statements. What are financial statements? Anyone? बेसिकली हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो हम एक अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं, जिसमें हम एक आपका एस्पेक्ट आता है समरी का भी, कि हमने समराइज करी सारी आपकी प्रोसेस अकाउंटिंग का. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर द आउटकम ऑफ द समराइजिंग प्रोसेस and are the sources of information on the basis of which conclusions are drawn about the profitability and financial position of the business concerned. Financial statement एक ऐसी statement है, it is the outcome of the summary of the whole process of accounting, जो आपने पूरा process किया, and it gives information जिसके basis के ऊपर हम conclusions draw करते हैं कि हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज बाय आउटसाइडर्स. अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा organized according to logical and consistent accounting procedures. The term financial statement generally refers to two statements: income statement and your balance sheet. Income statement means your profit and loss account also. According to section 2, subsection 40 of Companies Act 2013, financial statements in relation to a company include the following: a balance sheet as at the end of financial year, a statement of profit and loss account for the financial year, cash flow statement जो हमें कैश के different flows बताए कि operating activities, investing activities, financing activity, किस activity से business को कितना cash flow हुआ. A statement of changes in equity only if it is applicable, and explanatory notes if any. Now coming to the nature of financial statements. In the first place, your financial statements, they are based upon the recorded facts. जो हमने सारी रिकॉर्डिंग करी थ्रू आउट द अकाउंटिंग साइकिल, जितनी देर से आप अकाउंटिंग कर रहे हो तब से जब आप अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हो, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर बेस्ड अपॉन अकाउंट recorded facts. Then comes your accounting conventions. Your financial statements, they are based upon the conventions that are followed in order to maintain the accounts. Then comes your postulates. They are based upon the postulates. They are based upon the assumptions that are used, and it also involves personal judgment. जो लोग हैं जो इसको बनाते हैं उनकी personal judgment भी इनमें होती है. What are the objectives of financial statement? To provide reliable financial information about economic sources and obligations of the business firm. हमारी कितने इकोनॉमिक सोर्सेस हैं, कितनी ऑब्लिगेशंस है फर्म की, कि उसके बारे में हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. To provide other needed information about changes in such economic resources and obligations.
जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है अबाउट द चेंजेस दैट हैपेंड इन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, द रिसोर्सेज एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, it provides that also. To provide reliable information about changes in net resources arising out of business activities, business activities जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसके कारण जो हमारा नेट रिसोर्सेज में फर्क आया है उसको भी रिकॉर्ड करता है. To provide financial information that assist in estimating the earning potentials of the business, जो आपके future estimates आपने बनाने हैं about the earning potential कि business कितना earn करेगा उसके बारे में financial information provide करता है. To disclose to the extent possible other information related to financial statements that is relevant to the needs of the users of these statements. डिस्क्लोज करना, प्रोवाइड करना सारी इंफॉर्मेशन जो इसके यूजर्स को रिक्वायर्ड हो सके. एनी डाउट्स अंटिल नाउ? द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन, एनी डाउट्स? नो मैम. Coming to the types of financial statement, there are four main categories. One is your balance sheet, then you have your income statement, then you have statement of changes in owner's equity, and statement of changes in financial position, which is further categorized as your fund flow statement and cash flow statement. Coming to the first one, which is balance sheet. AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, defines balance sheet as a tabular statement of summary of balances carried forward after an actual and constructive closing of books of accounts and kept according to principles of accounting. The balance sheet shows all the assets owned by a concern and all the claim it owes to owners and outsiders. Balance sheet is prepared on a particular date. Income statement. It is a statement of revenues earned and the expenses incurred for earning that revenue, depicting the profit and loss. It is also prepared for a particular period. So, आपकी जो income statement है वो आपके profit and loss को depict करती है. Balance sheet आपकी assets and liabilities को. Then comes statement of changes in owner's equity. जो हम जैसे कई बार पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी क्या है? दिस इज योर टाइप ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली. So owner's equity refers to the claim of owners of the business, which means the shareholders, against the assets of the firm. So it consists of paid up share capital, retained earnings and reserves and surplus. ये क्या दिखाता है? ओपनिंग बैलेंस क्या था उनका, क्या कारण आए जिनके कारण इसमें चेंजेस आए, और क्लोजिंग बैलेंस क्या. Statement of changes in financial position. This statement it is prepared to show the changes in assets and liabilities from end of one period to end of another period. There are two statements that are prepared under this. One is your fund flow statement, second is your cash flow statement. Fund means your working capital. So this statement shows the sources from which the funds are received, which means your cash or your working capital received, and to uses to which this is put. So fund flow statement आपके working capital के साथ ही mainly deal करता है. Cash flow statement, it summarizes the changes in cash position of a business between two dates. कि आपका opening cash में और closing cash में जो फर्क आया वो क्यों आया है? The activities they are mainly categorized under three heads. Cash flow from operating activities, from financing activities, and from investing activities. Operating activities जो आपके routine के operations हैं. फाइनेंसिंग जो फाइनेंस से रिलेटेड है, और इन्वेस्टिंग जहां पे आप कहीं पे बिजनेस इन्वेस्ट करते हो. तो इन सोर्सेज से फंड्स को क्या ऑपरेशन कैश फ्लो हुआ है उसके बारे में जब हम समरी बना रहे हैं, दैट इज शोन अंडर योर कैश फ्लो
statement. बैलेंस शीट जो है that is usually prepared in horizontal format, assets को right hand side, liabilities को left hand side. Companies Act 2013 ने एक schedule दिया है, there is part 1 of schedule 3, तो उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनाते हैं. तो जो कंपनीज एक्ट है, जो कंपनी की वर्किंग को मैनेज करता है, तो उनके हिसाब से आपकी बैलेंस शीट इस हिसाब से बनती है. फर्स्ट पार्ट इज योर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें आपके शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं. पार्ट 2 इज योर एसेट, पहले नॉन करंट एसेट्स व्हिच मींस योर फिक्स्ड एसेट, देन कम योर करंट एसेट्स. Then coming to your income statement, it is prepared according to the nature of the business. Trading concern है कि manufacturing concern है. Similarly, part 2 of Schedule 3 of Companies Act 2013, it has also given the format for the preparation of P&L account. उसका format कुछ ऐसा है: revenue from operations, other income, total revenue, फिर expenses लिख दो, फिर profit. So this is what is the format. I think आपने ये basic accounting में cover किया हुआ. Now coming to the characteristics of ideal financial statement, that what are the statements that are, what are the characteristics that should be present in the financial statements. So in the first place, they should depict true and financial position of the business concerned. जो उसकी position है उस time पे, उनको वही डिपिक्ट करनी चाहिए है, कोई मैनिपुलेशन या कुछ नहीं होना चाहिए है. Then comes effective presentation. It should be presented in an effective manner. Relevance, all the relevant information it should be covered. It should be attractive, जैसे आपने present किया है वो attractive हो, easy हो समझने में, comparable हो, या आप 2 सालों के आपस में या आप अपनी फर्म की किसी और फर्म के साथ कंपेयर कर सके. There should be analytical representation, जो आपने represent किया है, you should be able to analyze it also. It should be brief, concise हो, brief हो, and promptness, जितनी जल्दी आपको जरूरत पड़े उतनी जल्दी आप उसको अरेंज कर सकते. Coming to the use of financial statements, it is useful for all the users in one way or the other. Management के लिए useful है ताकि वो performance को control कर सके, efficiency check कर सके different cost centers की. Creditors के लिए useful है ताकि वो assess कर सके कि business की liquidity position क्या है, solvency position क्या है. बैंकर्स के लिए यूजफुल है कि जब उन्होंने लोन देना है, वो लोन देने से पहले चेक कर सके कि बिजनेस की वायबिलिटी क्या है, क्या सिक्योरिटी वो ऑफर कर रहे हैं. इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है कि वो असेस कर सके कि उनकी मनी जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फर्म के फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, एक्सपेंशन प्लान क्या है, पैसे क्या है उनके पास. गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है ताकि वो टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस कर सके. ट्रेड एसोसिएशंस के लिए ताकि वो अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, और स्टॉक एक्सचेंज के लिए ताकि वो शेयर की प्राइस फिक्स कर सके. लिमिटेशंस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स ओनली इंटरिम रिपोर्ट. एक टाइम के बाद ही पता चलती है, 6 महीने, महीना, आज की डेट में बोलूं तो फटाफट नहीं मिलती. देन इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट पोजीशन, क्योंकि दे आर रिकॉर्डेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न. ये बिजनेस चली जाना है तो हम कॉस्ट को रिवाइज नहीं करते हैं, सो इट डज नॉट गिव अस द एग्जैक्ट पोजीशन. देन कम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट. जिस कॉस्ट पे हमने बिजनेस को एक्वायर किया हुआ होता है, हम उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते रहते हैं, वी डू नॉट मेक चेंजेस, सो दैट इज वन लिमिटेशन. नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स दे आर इग्नोर्ड. So that means जिसमें पैसे का देन लेन नहीं है वो हमने इग्नोर कर दिया, and there is no precision. It is not precise. It is not concise. Any doubts in this? The students who are online with me, any doubts? No, ma'am. Namanpreet, any doubt?
हाँ जी कुणाल, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। Now coming to the main topic, which is your financial statement analysis. जो हम इसको पढ़ के मुझे समझ आ रहा है, दो टर्म्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस। ये क्या है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप एनालाइज कर रहे हो ताकि आपको फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चले, the relationship between the different items of balance sheet, P&L account या और भी कोई डेटा जो रेलेवेंट है, आप उसका आपस में जो रिलेशनशिप है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। There is a definition that is given by Myers. ये definition क्या कहती है? Financial statement analysis is largely a study of relationship among various financial factors in a business as disclosed by a single set of statements and the study of trend of these factors as shown in a series of statements. Sales कितनी बढ़ी 5 सालों में, 5 सालों का डेटा एनालाइज किया, that is what, that is your financial statement analysis. प्रॉफिट का ट्रेंड एनालाइज किया, वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. So what we are doing, we are assessing, we are analyzing the financial statements to study the relationship, to study the financial strength and weaknesses, to find the trend in factors में different trend क्या आ रहा है, that is your financial statement analysis. Coming to the meaning, there is another thing also. The purpose of it is to diagnose the information contained in financial statements so as to judge the profitability and financial soundness of the firm. Firm की profitability क्या है, वो financially कितनी sound है, that is one of the main purpose. Coming to the objectives or importance, to assess the earning capacity or profitability of the firm. एक firm की earning capacity कितना है, कितना वो earn करती है, कितनी उसकी profitability होगी, उसको assess करने में help करती है. Then to assess the operational efficiency and managerial effectiveness, firm कितनी efficiently काम कर रही है, मैनेजर्स उसको कितना इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको देखने में हेल्प करती है. टू असेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, एक फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी उसकी कितनी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म में वो कितना लिक्विड है, कितना सॉल्वेंट है, उसको पढ़ने में हेल्प करता है. To identify the reasons for change in profitability and financial position of the firm, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आया, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क आया, उसका क्या कारण है. टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन, आपने दो फर्म्स को आपस में कंपेयर करना है, तो उसमें हेल्प करता है. टू मेक फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, उसके बारे में फोरकास्ट करना. To help in decision making and control, बिजनेस के बारे में डिफरेंट डिसीजंस फॉर्मुलेट करना, डिविडेंड के बारे में डिसाइड करना. व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? हाँ जी बच्चे, the amount which the company pays to its shareholders as a reward for their shareholding, जो हम रिटर्न देते हैं
शेयर्स के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज योर डिविडेंड। तो डिविडेंड के बारे में जो पॉलिसी फ्रेम करना, उसके बारे में डिसाइड करना, उसके लिए हेल्प करता है। एंड टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, कहीं से लोन लेना है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करनी है, तो उसके बारे में भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। The parties that are interested in financial analysis, investors, उनके पैसे लगे हुए हैं, management, they are managing the business, creditors, they have supplied goods to them on credit, right? Bankers, in order to give them loans, in order to give them advances, employees, in the first place, they are putting in their effort into the business. सेकेंडली दे वुड वांट टू नो कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि उनके पर्क्स, उनके बेनिफिट्स, उनके इंक्रीमेंट्स आपकी फाइनेंसेस पे कंसर्न है। गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, ट्रेड एसोसिएशंस फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर डिफरेंट फर्म्स, stock exchanges to list the price of the securities, economists and researchers for the purpose of research, जो उन्होंने रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करनी है, जो उन्होंने सर्वेस करने हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज अगेन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स अंटिल नाउ? No, ma'am. So I'll take up the other topic tomorrow because उससे फिर सारा आपका जो लिंक है ना, that would be there. So if in case there is any doubt until now, we can take that up right now. Any doubts with the topic? All right then, bache. The ones who are online with me, I'll be ending this session here. Have a good day.